Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, in the previous video lecture, we solved exercise 11.3. Now, in this video lecture, let's learn about conversion of units. Students, if you draw a square of 1 centimeter on a graph sheet, you will find that this square of side 1 centimeter will be divided into 100 squares, each of side 1 mm. सो क्या है, अगर आप एक स्क्वायर जिसका आप साइड 1 सेंटीमीटर रखेंगे, अगर आप ऐसा स्क्वायर ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर होगा, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 100 स्क्वायर्स में, और हर स्क्वायर का साइड रहेगा 1 mm, बिकॉज हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के. वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 millimeters. Now area of such a square of side 1 centimeter is equal, we know that area of square is side into side, so area of a square of side 1 centimeter is equal to 1 centimeter into 1 centimeter. Now we know that 1 centimeter is equal to 10 mm, so instead of this 1 centimeter we'll write here 10 mm into 10 mm. Now 10 into 10 is 100 and millimeter into millimeter is millimeter square. So area of a square of side 1 centimeter is equal to 100 millimeter square, or we can say that area of a square of side 1 centimeter is equal to area of 100 squares, each of side 1 mm. So एक स्क्वायर जिसका साइड 1 सेंटीमीटर होगा, इस स्क्वायर का एरिया जो है वो बराबर होगा 100 स्क्वायर्स के एरिया का, लेकिन वो स्क्वायर वो जो 100 स्क्वायर्स होंगे उनका साइड होगा 1 mm, 1 millimeter. Clear? Now in the metric system, areas of land are also measured in hectares. So क्या है, metric system में हम land का area जो है वो हम एक और unit में measure करते हैं, that unit is hectares, and this hectares is written in short form as HA. Now a square of side 100 meter has an area of 1 hectare. So students, you have to remember, एक स्क्वायर जिसका साइड 100 मीटर होता है उसका एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर्स के बराबर होता है, और वी कैन से ये जो 1 हेक्टेयर है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 100 मीटर, दैट इज 100 मीटर इंटू 100 मीटर. ना 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, सो 1 हेक्टेयर इज इक्वल व्हाट, इट्स 100 इंटू 100. So it's equal to 10,000 meter square. So you have to remember that 1 hectare is equal to 10,000 meter square. Clear? Now students, remember when we convert a unit of area to a smaller unit, the resulting number of units will be bigger. See, for example, this is 10,000 centimeter square. We can write this 10,000 centimeter square as 100 centimeter into 100 centimeters. Now we know that 1 centimeter is 10 mm, so 100 centimeters is 1000 mm, so 1000 mm into 1000 mm, so that is 10 lakh millimeter square. So this 10,000 centimeter square is equal to 10 lakhs millimeter square. So क्या देखा हमने यहाँ पे कि जो ये यूनिट था that was bigger unit. Centimeter square is a bigger unit. When we converted this bigger unit to smaller units, the resulting number is bigger. It means this number is having more digits than this number. Clear? But when we convert a unit of area to a larger unit, अब जब हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो दैट टाइम द नंबर ऑफ लार्जर यूनिट्स विल बी स्मॉलर. वो जो नंबर होगा जिसका यूनिट लार्जर होगा, बट वो जो नंबर होगा उसमें डिजिट्स कम होंगे. नाउ दिस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 बाय 10,000 meter square, so that can be written as 0.1 meter square. So it means here this is a larger unit but it's having lesser digits than this which was a smaller unit. Clear? Now let's discuss the applications. You must have observed that quite often in gardens or parks some space is left all around in the form of path or in between as क्रॉस पाथ्स. तो आपने देखा होगा कि जो हमारे गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, गार्डन तो मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके सेंटर में क्या होता है, पाथ बनाया होता है चलने के लिए. कभी कभार दोनों साइड से ऐसे भी पाथ होता है और ऐसे भी पाथ होता है, देन वी कॉल दोज पाथ्स एज क्रॉस पाथ्स. क्लियर? और कभी कभार इर्द गिर्द ऐसे पाथ होता है और बीच में गार्डन होता है. और क्या हो सकता है, मान लीजिए कभी कभार हमें क्या करना है कि ये जो गार्डन के इर्द गिर्द का पाथ है, हमें कॉस्ट निकालना है कि इस पाथ को बनाने में हमें कितना लगेगा. सपोज एक टाइल जो है वो 10 रुपए का आता है, तो हमें देखना है कि इस पूरे पाथ में कितने टाइल्स लगेंगे, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट कितनी कीमत लगेगी इस पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में. सो वहाँ पे हम इस चीज़ का
इस्तेमाल करते हैं. Similarly, a framed picture has some space left all around it. कभी कभार एक पिक्चर जो हम फ्रेम में लगा देते हैं, फ्रेम के इर्द गिर्द भी कुछ स्पेस रखी गई होती है. एंड वी नीड टू फाइंड द एरियाज ऑफ सच पाथ्स. हमें ऐसे पाथ्स या ऐसे बॉर्डर्स का एरिया निकालना पड़ता है, बिकॉज जब हम एरिया निकालेंगे तभी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं. उनको बनाने का कॉस्ट कितना लगेगा वो हम तब जान सकते हैं जब हमें उनका एरिया पता होगा. क्लियर? सो दैट्स वाई वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड द एरियाज. Now students, let's solve exercise 11.4, and using these questions we'll learn the applications of finding the area. Question number 1 is, a garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path. Also find the area of the garden in hectare. So हमारे पास क्या है, एक गार्डन है. दिस इज द गार्डन. सेंटर में जो है, इस गार्डन की लेंथ हमें देके है 90 मीटर एंड ब्रेड देके है 75 मीटर्स. और इस गार्डन के इर्द गिर्द एक पाथ बनाया हुआ है. एक पाथ बनाना है जिसका पाथ का जो विड्थ है, पाथ की विड्थ इज 5 मीटर. दैट मीन्स ऐसे यहाँ से भी 5 मीटर विड्थ है, यहाँ से भी 5 मीटर, ऐसे भी 5 मीटर एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ. इस पाथ का हमें एरिया बताना है और इस गार्डन का भी हमें एरिया निकालना है हेक्टेयर्स में. नाउ length of garden is given as 90 meters. Breadth of the garden is 75 meters. We know that area of rectangle is length into breadth. So area of garden is length into breadth, that is 90 meter into 75 meters. Now 90 into 75 is 6750 and meter into meter is meter square. So this is the area of garden in meter square. Now breadth of garden including path. ये जो garden है इसकी breadth ये path लेके, that means if this is the breadth, clear, this is the breadth, and then if we take the whole breadth of this whole area, that means we have to take this breadth 75 plus this 5 meter width plus this 5 meter width. So ये जो garden है इसकी ये जो हमारे पास एरिया है इसकी जो ब्रेड्थ होगी, यानी गार्डन की ब्रेड्थ प्लस ये जो विड्थ है पाथ की हमें दोनों साइड से, फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, इट विल बी 75 मीटर प्लस 5 एंड प्लस 5, दैट इज 85. इट मीन्स दिस ब्रेड्थ इज होल ब्रेड्थ इज 85 मीटर्स. नाउ सिमिलरली लेंथ ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग द पाथ. ये जो लेंथ है गार्डन की, पाथ को लेके, गार्डन तो बस इतना है, पाथ लेके ये वाला और ये वाला पोर्शन आता है. सो 90 प्लस 5 प्लस 5. So 90 meter plus 5 meter plus 5 meter, that is 100 meters. So length of this whole area is 100 meters. Clear? Now area of the garden including path. So अब area निकालेंगे हम इस गार्डन का, लेकिन इस पाथ को लेके पूरे रीजन का हम एरिया ढूंढेंगे. सो दैट इज अगेन लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ इज 100 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 85 मीटर. सो दैट इज 8500 मीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज एरिया ऑफ द पाथ. सो एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर होगा, एक तो इस पूरे का एरिया, पूरे रीजन का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस गार्डन. सो area of this whole region is 8500 meter square minus area of garden is 6750 meter square. So when we will subtract this 6750 from this 8500, we'll get 1750 meter square. It means area of this path is 1750 meter square. Clear? Now area of garden, we have to also find out the area of garden in hectares. So area of garden in hectares is, for converting this unit meter square into hectares, we'll multiply this by 0.00001. So when we will multiply this with this, we'll get 0.675 hectares, because we know that 1 meter square is equal to 0.00001 hectares. So you have to remember this, and when you will multiply this 6750 with this, you will get 0.675 hectares. So this is the area of the garden in hectares. Clear? Now students, question number 2 is, a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. अब हमारे पास एक और रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 125 मीटर है एंड ब्रेड्थ इज 65 मीटर्स, और इसके इर्द गिर्द पाथ है जो कि वाइड है 3 मीटर. दैट मीन्स विड्थ ऑफ द पाथ इज 3 meters. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पाथ. इट मीन्स विल फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ this rectangular park, then we'll find the area of the whole region, that means area of garden including the path. Then for finding the area of path, we will subtract the area of this park from the area of garden plus this path.
Now, length of park is 125 meters, breadth of park is 65 meters. And we know that area of rectangle is length into breadth. It means area of park is length into breadth, that is 125 meters into 65 meters, and that is 8125 meter square. Now, length of park including path. इस पार्क की लेंथ पाथ को लेके, that means यहाँ से भी 3 मीटर और है, यहाँ से भी और 3 मीटर है. It means 125 plus 3 that is 131 meters. Then breadth of park including path, breadth is this 65 meter plus यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, so breadth of the park including path is 65 meter plus 3 meter plus 3 meter, that is 71 meters. So it means area of park including the path is again length into breadth, that is this length 131 meter into breadth 71 meters, that is 9301 meter square. Now area of path will be equal to this 9301 meter square minus this 8125 meter square. So 9301 meter square minus 8125 meter square is 1176 meter square. So this 1176 meter square is the area of the path. Clear? So students, I will end this video here. In the next coming video, we'll solve further questions of this exercise. Till then, you will keep on practicing all those questions on your practice notebooks. Allah Hafiz.